Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So this channel have lot of videos on banking, finance and economics. The playlist link is available in description. Watch 10 to 15 videos per day to be knowledgeable. Now one request is coming, sir, discuss recession. And this word is now being frequently used, and there are indications that world may face recession in coming days, and what will be its impact on India and what are its implications. Now this recession word is used in economy to define a very peculiar situation. Normally what happens is our economy run on two basic factors, that is called demand and supply. So on one side there are consumers, on other side they are the people, those are producing it, that is the producers. Now consumption basically depends upon the earning capabilities of people, those are buying these goods. So some demand is compulsory and some are discretionary. Compulsory means the type of demand without which we cannot live. So to meet that demand, we buy those goods either through our income or by borrowing. And when borrowing becomes costly, certain people start reducing their consumption patterns. So due to high inflation, now in global economy there is a trend that interest rates are rising. And once interest rate rises, it automatically makes the money costly. Borrowing becomes costly. And income of people is already less, then they cannot afford costly credit. So on one side, due to suppression of income, their purchasing power has reduced. On the other side, due to costly money, they are not able to avail the credit, their purchasing power reduces. And third, due to the high cost of goods, their purchasing power reduces. So all these factors put together leads to a situation where demand of goods start declining. And when a producer finds it difficult to sell the goods, this is a stage is called recession. Because if we will not produce more, growth will not emerge. So growth is always dependent upon high demand. Now if all factors moving in a direction that is reducing the demand means ultimately it is going to affect the production. Why a producer will produce goods if there is no demand? So if there is a excess inventory or he is having unsold goods, the next step is he will reduce the production, he will reduce the production cycle, and this production cycle reduction further result into lower manpower requirement. And once this lower manpower cycle sets in, more people are retrenched from the job, and the moment people are retrenched from the job, again there is a further compression of demand because there will be less people those are earning. So a set of negative cycle sets in when recession comes, and that's why recessionary conditions are very dangerous for any economy, because one after another the people are affected, their jobs are affected, their manufacturing capabilities are affected, and
a set of negativities start setting in. So whether recession will come, whether it will not come, only time will tell. But economists has their own models. Based on those models, they forecast. The purpose is forewarning. Forewarning means all the people, those are responsible for managing the economy, they take timely steps to avoid that situation. So if timely steps are taken, sometimes such situations may be avoided also. And sometimes despite taking lot of steps, such situation may not be avoided. So we have to wait and see whether the world actually goes into recession or they are able to stop the recession. And the impact on India can only be known when recession actually sets in. Because you can say the size and the component of Indian economy is totally different than Western world. Indian economy is highly dependent on agriculture. So sometime industrial recession does not affect that much to the Indian economy as it affects to the industrial economies. So this is to be seen whether this recession hits the agriculture output also, whether this recession hits the industrial production in India, because India has some peculiar advantages also. It has a very large population, and within this large population, the consumption is always more than production. So even if some consumption comes down, still it will be more than the production. In that eventuality, recession will not set in India. So it is to be seen, it is too early to make any assessment about recession in India, and that's why I think no economist is talking about recession in India. At present, they are talking recession in Western world, more especially US and other developed nations. But always being a global economy, there can be some spillover effects on other countries also. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स की आपको जानकारी देते हैं. एक प्लेलिस्ट है, 10 से 15 वीडियो रोज की आप देखेंगे, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी. साथ ही मैंने आपको एक लिंक भी दिया है जो करंट अफेयर से संबंधित है. उस लिंक को क्लिक करेंगे, एक ऐप पे पहुंचेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और करंट ईयर का प्लान ले लेंगे. कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा. अब आप लोगों की डिमांड है कि सर एक रिसेशन के ऊपर आप अपना सेशन बनाइए और हमें सिखाइए. देखो रिसेशन क्या होता है. रिसेशन एक बहुत ही अजीबोगरीब इकोनॉमी का फिनोमेना. इकोनॉमी के जो मुख्य फैक्टर्स हैं उनको हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड का मतलब है जो लोग चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं उनकी कंजम्पशन कितनी है और वो कितनी गुड्स की डिमांड कर रहे हैं. दूसरी साइड होता है प्रोड्यूसर, जो उन गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, उगा रहा है और उपलब्ध करा रहा है. तो जब जो कंज्यूम करने वाला व्यक्ति है, यदि उसकी इनकम्स घटनी शुरू हो जाए तो नेचुरल है वो अपनी कंजम्पशन को कट करेगा. या जो वो लोन लेके कंज्यूम कर रहा था चीज़ों को, अगर लोन महंगा हो जाए तो भी वो कंजम्पशन को रिड्यूस करेगा. और भी कई फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से वो अपनी कंजम्पशन पे काबू करे. तो जब जब ऐसे फैक्टर्स इकोनॉमी में सेट इन होने लगते हैं जहां कंज्यूमर्स अपनी कंजम्पशन को रिड्यूस करने लगते हैं, मे बी ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन
अधिक कीमतों की वजह से भी कंजम्पशन कम हो सकती है। मेरे पास लिमिटेड पैसे हैं, एक चीज़ 80 रुपये लीटर आ रही थी, मैं ज़्यादा खरीदूंगा। 100 रुपये लीटर आ रही है, मुझे 100 रुपये का ही पेट्रोल चाहिए, तो मैं कम लीटर्स खरीदूंगा। तो नेचुरल है कि जो क्वांटिटी है उसकी रिड्यूस हो जाएगी कंजम्पशन की। ठीक है, तो जब जब हाई इन्फ्लेशंस होती हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगते हैं, लोन की उपलब्धता कम होती है, इनकम लेवल कम होते हैं तो उसका सीधा असर कंजम्पशन पे पड़ता है। और ऑलमोस्ट ये सारे फैक्टर इस समय वर्ल्ड इकोनॉमी में अवेलेबल हैं, और इसीलिए इकोनॉमिस्ट चिंतित हैं कि क्या ये सारे फैक्टर मिलके कंजम्पशन को कोलैप्स तो नहीं कर देंगे, कंजम्पशन को रिड्यूस तो नहीं कर देंगे, कंजम्पशन को घटा तो नहीं देंगे। तो अगर कंजम्पशन में घटाव आना शुरू हो गया तो नेचुरल है, जो मैन्युफैक्चरर है जब उसका माल नहीं बिकेगा तो वो और नहीं बनाएगा, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर गुड्स तभी तक बना रहा है, तभी तक प्रोड्यूस कर रहा है जब तक वो बिक रही है। जब उसकी बिक्री कम हो जाएगी, जब सामने से डिमांड घट जाएगी, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो अपनी कंजम्पशन, अपनी प्रोडक्शन को घटाएगा। प्रोडक्शन घटाएगा तो जो लोग उसमें एम्प्लॉई लगे हुए हैं, मैन पावर लगी हुई है, रिसोर्सेज लगी हुई है, उसको भी घटाएगा। रिट्रेंचमेंट शुरू हो जाएंगी, लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा। तो जब ये लोग और अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो इनकी भी इनकम ख़त्म हो जाएगी, इनसे जो आ रही डिमांड थी वो भी घट जाएगी, और फर्दर फिर कंजम्पशन कम हो जाएगी और प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो एक नेगेटिव साइकिल के अंदर इकोनॉमी चली जाती है, जहां एक के बाद एक घटनाएं नेगेटिव दिशा में बढ़ने लगती है, और इसको रिसेशन का दुष्परिणाम बोलते हैं। क्योंकि जब हम प्रोडक्शन को कट करते हैं तो उसका सीधा असर एम्प्लॉयमेंट पे आता है, और जब एम्प्लॉयमेंट में आता है तो इनकम्स क्रैश होती हैं। जब इनकम क्रैश होती हैं तो परचेजिंग पावर घटती है, परचेजिंग पावर घटती है तो कंट्री की प्रोडक्शन घटती चली जाती है, और एक ये नेगेटिव साइकिल बननी शुरू हो जाती है। तो इकोनॉमिक्स का क्या काम होता है कि वो जो सिम्टम्स हैं उनको देख के आपको फोरवार्न करते हैं, पहले से आपको सचेत करते हैं कि ऐसे फैक्टर्स इकोनॉमी में बिल्ड इन हो रहे हैं जो आपको इस स्थिति पे लाकर खड़ा कर सकते हैं। जरूरी नहीं वो आएगी स्थिति, वो सचेत कर रहे हैं। अब जो लोग इकोनॉमी को मैनेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक्स हैं और हैं, उनका ये काम होता है कि इन सिम्टम्स को देख के आने वाले दिनों के लिए वो अपने कदम उठाएं, ताकि इस तरह की सिचुएशन से बचा जा सके। बचते हैं या नहीं बचते हैं ये वक्त बताता है, पर उसकी तरफ प्रयास किए जाते हैं। अब अगला प्रश्न ये आता है कि क्या इस रिसेशन का भारत पे भी असर होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पहले ये जो रिसेशन है इसकी बात की जा रही है कि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर होगी, मेनली यूएस और उन कंट्रीज़ में होगी जो इंडस्ट्री पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब भारत की इकोनॉमी में कई प्लस फैक्टर्स भी हैं। पहला प्लस फैक्टर है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा कंपोनेंट एग्रीकल्चर बेस्ड है, और क्योंकि वो खाने पीने की चीज़ें हैं तो इसलिए रिसेशन का उस पर सबसे कम असर होता है, नाम मात्र असर होता है, क्योंकि जब तक ह्यूमन बीइंग है कंजम्पशन होगी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस होती है, जो इकोनॉमीज खाली इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट होते हैं, वो रिसेशन से सबसे ज़्यादा हिट होते हैं। तो भारत में वो सिर्फ एक कंपोनेंट है। और तीसरा भारत की स्ट्रेंथ क्या है इकोनॉमी की, कि हम सर्विस सेक्टर हमारा बहुत बड़ा है। तो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है और सर्विस सेक्टर है, तो तीन चीज़ें हैं। तो अगर सर्विस सेक्टर में रिसेशन का असर नहीं आता बाई चांस, और एग्रीकल्चर में नहीं आता और खाली इंडस्ट्री में आता है, तो इंडिया पे होने वाला असर कम हो सकता है। होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। अभी तो क्योंकि हर इकोनॉमी ग्लोबल फैक्टर्स के साथ जुड़ी हुई है, तो अगर कोई भी घटना किसी भी कंट्री में घटेगी
उसका कोई असर ना पड़े आपके ऊपर, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, पर कितना पड़ेगा, क्या बहुत अधिक पड़ेगा, ये सब जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती हैं तब पता लगता है। तो इस समय हम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गहराई में विचार नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो जो बातें की जा रही है वो ये कहा जा रहा है रिसेशन या तो इसी साल आ जाएगी या अगले साल आएगी। अभी इसका टाइमलाइन क्लियर नहीं हो रहा है, पर काफ़ी लोग चिंतित हैं इसके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल।